Before we begin the seminar, I would like to inform everyone that if you have any questions throughout the webinar, then you need to raise your hand and then our team will enable your microphone, and from there you can unmute yourself and ask the relevant questions. Thank you. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you all to All Pakistan Tech and Art Festival 2021, organized by GCU-ACM Student Chapter, Lahore. The title of our today's workshop is Game Development, Make Your First Game Scene in an Hour. A quick abstract of the talk. In this quick talk, not only will we talk about what is game development and how you can make a business out of it, we'll also go for a quick demo of how to make your first game scene in Unity. We will look at the basic scene settings, 3D coordinates, 3D shapes added to the scene. We will learn how we can add game physics like gravity and collision, etc. And finally, we'll learn how to import ready-made human characters and turn that into an unlimited running game. Now, for our speaker introduction, our guest speaker is going to be Mr. Syed Basit Ali for this webinar. Now, Mr. Basit Ali is an entrepreneur, professional tech trainer, apps and game development expert, tech enthusiast, and a technology consultant. He did his master's in computer science from LUMS in 2003. At LUMS, his area of interest had been theoretical computer sciences, including graph theory, analysis and design of advanced algorithms and data structures, etc. He has been involved with a number of local startups in his career. He's currently the founder of Eccentrica Technologies and has been the co-founder of a couple of other startups. He's currently a faculty member at Information Technology University. Previously, he was a permanent faculty member in CS department at the University of Central Punjab. He has worked on a vast variety of some interesting commercial software projects for several technology companies, especially in mobile gaming industry, mobile apps, web development, and last but not least, the financial sector, including e-banking and mobile banking. Without any further delay, I would like to hand over this webinar to our respected guest. You may have the stage now, sir. Thank you very much. I hope you guys can hear me. This is Basit Ali. So do we have Hassan on the call? I'll be having a few words with Hassan to confirm that everybody can hear me, can see me. Yes, sir, we can hear you and we can see you. Wonderful. Thank you, Hassan. So this is going to be one interesting session to begin with. I can see this as the audience generally is mostly the students who are doing their undergrad, right? I can see the IDs coming in from BSCS. So these are second year, third year, fourth year students. And honestly speaking, making games has been a cool thing that all of us have always wanted to do. Some of you might have tried that as well. But today what we're going to see is, initially we'll try to see how exactly the game making process works. Obviously within a few hours, whatever we can catch up with, but we will actually end up making a small game scene. Theoretical things that we want to follow. So I'll be sharing my screen with you guys as well to make sure that you can see what I want to present. So you should be able to see my screen in 5, 4, 3, 2, 1 now. Hassan, can you see the screen?
Yes, sir. We can see the screen. Wonderful. So what I'm going to tell you is initially we will start changing up our mind about the game development. All of us have been playing games. All of us have been engaged with games. Some of us have been addicted with games. And every now and then we continue changing our favorite games. So every few months we find another game which is more engaging and more fun than the previous one, and then we just move on to that. But when you talk about game development or making the games yourself, there's a different perspective to it. हम उसको दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं. We want to be observant of the fact that making games is slightly, well, very different from what we call playing games. So initially, we start off with asking a few questions. So my questions will be something like this. You can DM me when you want. So my four questions for today are going to be what, why, who, and how. And the details are, we will first answer the question, what is a game? Why we make games? Who makes these games? And then eventually we come to the fun part, how these games are made. So all of us know that the games are the fun things we do on the mobile, or the fun things that we do on the PC, or we play the games on the console, your Xbox and your PlayStation and your Nintendos and whatever console you're using. So what are games? If we try to academically define a game, we all of us have been reading the books and definitions of things. So what is a game? We're talking about the computer games or the video games that we call. So generally, a game is an entertainment software. As a lot of people are from engineering and computer science background here, all of you know that the software is basically a set of instructions we give to a computer to solve some problems. So while software is usually defined as a set of instructions given to the computer to solve a problem, generally it looks like in games there is no problem in general. But looking closely, entertaining people is also a task that you need to do. So the primary purpose of most of the games is to entertain the person who's playing it. But one more aspect to it, your video games are interactive. All of us watch movies, all of us watch TV, we stream videos over YouTube and all that for entertainment. What is different about watching in cinema, watching a movie and watching a TV and playing a game? What is different? There is an interaction. You as a player, आप game खेलते हैं, आप उसमें input देते हैं, आप keyboard पे keys कंट्रोलर के बटन्स प्रेस करते हैं, आप अपने फोन को पकड़ के घुमाते हैं, हिलाते हैं, टच स्क्रीन पे टच करते हैं. There are several ways of interacting with the game. So the games are interactive, movies are not. Well, there are some interactive movies now, but games are continuously interactive entertainment software. So you as a game developer, once you start making your own games, you have to be more sure about these are slightly old statistics, some older numbers, but just to give you an idea, in 2018, 2018 mein, these are the revenues, these are the income of individual games. I'm sure you must have heard of several of these games. For example, Fortnite made 2.4 billion US dollars in a year, 2018. Dungeon Fighter, League of Legends, Pokemon Go was very popular back then, and honestly, it has been very popular. It's among top 5 in 2020 as well.
and I think it made around 2 billion. Yeah, around 2 billion in 2020 as well. Similarly, I've been playing Candy Crush and Clash Royale. So there are so many games that we have heard of. You can imagine that these games are actually making billions of dollars, not even millions. It's like billions of dollars. So the main reason why people start making games is not because they want to have fun, but it is because they want to make money. There is a lot of money involved. Honestly, आमतौर पे we think that, well, I have never paid any money to a game, so how do these games make money? उस पे भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि games पैसे बनाती कैसे हैं, how exactly they make money. But generally, most of the cases, the most important reason why people make games is money. A few more numbers, for example. This is थोड़ा सा छोटा font है, maybe you can see this. But these are by company. कौन सी companies ने fourth quarter of 2019, ये एक डेढ़ साल पुरानी figure है once again, किस company ने कितना पैसे बनाए in terms of game revenues in US dollars. So you can see that this is Tencent making 5.23 billion dollars. Hassan, do you have any idea? Tencent कौन सी game बनाती है? Which game does Tencent make? Not really. I don't really have an idea. Have you heard of the name PUBG? Yes, I have. And the Call of Duty Mobile. So these are the two main popular titles, and there are dozens of other titles they make. So Tencent has made like 5.23 billion US dollars in only one quarter of 2019. And then there are big names. We have Sony, we have Apple, we have Microsoft, we have Nintendo, we have Google. So Google is making money out of games, and we have obviously Activision and Blizzard. We have Electronic Arts. So these are popular names we all know. So these companies have been making big money out of games only video games. Another example, in 2019, these are the divisions, how much money was made in different platforms. And you can see 64.4 billion US dollars were made on a mobile platform. So when I say mobile, it is mainly your iPhone, iOS. So I should say iOS because that includes iPad as well, and Android. I don't think any other platform is significant anymore. There was a time when BlackBerry and Windows were also taking some share, but mainly it is mobile. So mobile games are making a lot of money, and then it comes to PC. So when I say PC, it is mainly Windows computers, desktops, laptops, and some Macs as well. And then consoles. So your Xboxes and PlayStations and Nintendos, these are actually the third big market. They're not the most largest market. So all those friends we have in this conversation right now, or those who are listening, some of you might have your PlayStations or your Xbox consoles. And you know that when you're buying those games, they're pretty expensive, $50, $60, $70. They go beyond 10,000 bucks in the local market as a DVD if you want to go for. Mostly people don't go for DVDs anymore. But there are other subscription models coming in for console as well. So console is staying alive and console is growing, but the biggest market is out there in mobile. Why, people ask, is mobile the largest platform? Is because for playing a game, you really don't have to boot a computer or start a console. You just pull the game out of your pocket whenever you're sitting, whenever you have free time. You're at a bus stop, you're waiting at the university, you are going somewhere, you're traveling in the bus or a train. Anywhere and everywhere you could actually play a game. So mobiles are the most common platform in general for everything right now. So that also includes game, and a lot of money is involved there as well. So out of the questions, what and why, we know the game is an entertainment interactive software. And why do we make money? Why do we make games? Well, we want to make a lot of money. Now the third question is how. How do we make a game? And this is generally a picture I like. I took it from a website. Of the process of making a game. कि हम game बना रहे हैं, what are the steps?
How do we actually start making a game, and what are the things that are done? So on the stage one, there is an idea in your mind that you want to make a game. Any idea. So I will have a racing game, or I'm going to have a fighting game, or I will have a board game, or a puzzle game, or I'll have a game which is a puzzle adventure where it is an action plus puzzle, or I will have a game which is more of a war plus adventure, or maybe it is a comedy plus war. So you never know. So you start up with a game idea, probably in your mind, usually in your mind or on a piece of paper, and then you work on the idea feasibility. So we have to look at it as a professional game development project, not as a fun project in general. Actually, you have a lot of fun. बहुत मजा आता है गेम बनाते वक्त, बहुत मजेदार किस्म के स्टेप्स हैं जिसमें we enjoy a lot, but we have to keep focused on exactly why we're making the game. We want to make the game to actually make money. So if you are making a game which nobody's going to play, you will get no money. Once you get no money, there's no point in making a game. So you have to look at the idea of feasibility. Why are you making this game, and if making this game is feasible or not? Who will be the customers? Who will be the competition? Are there any similar games out there? Who's going to be the publisher? If there are similar games out there, what are you bringing new to the table, or what is the new flavor you're bringing? So all these things, and eventually you put a final idea maybe on a piece of paper. But generally, most of the paperwork happens in the stage two. So the step two is about the game design. So in the game design, we talk about the generally game mechanics, the game flow, the game progress, the game economy. What are these tech stuff means? So generally you get into more detail about the game. So अगर कहीं कोई बात करते हैं कि जी game design क्या है, it's not about the graphic design, or it is not about the 3D model design, or it is not about the sketching. Game design is basically a map. It's a document. It's a specification document. I'm sure software engineering के students भी यहाँ बैठे होंगे. So when you talk about the requirement specification of a software, it is similar to a game specification. So in game design, we talk about who will be the characters, what will be the stages, how many scenes, how many levels, what do we do on every level, what is the money, do we have any coins in the game, or do we have any dollars in the game, or do we have any other currency? Do you get a gem for doing something? फिर कितने gems के कितने coins मिलेंगे, कितने coins खरीदने हो तो कितने dollars हम खर्च करेंगे. So total whole monetization mechanism के game economy कैसे काम करेगी. Also real money versus virtual money कैसे काम करेगी. वो लोग जो 10 घंटे गेम खेलते हैं उनको कितने coins मिलेंगे, या कोई मुझे बगैर गेम खेले $2 दे देता है रियल वर्ल्ड डॉलर्स, तो उसको कितने हम कॉइन्स दे देंगे. गेम प्रोग्रेस कैसे करेगी, लोगों को गेम में एंगेज कैसे रखना है, कितनी देर के बाद लोगों को ब्रेक देनी है, और उसके बाद उनको दोबारा कब बुलाना है, दिन में कितनी दफा गेम खिलानी है लोगों को. Actually, game designers sit and decide that on their own. So how many times you have played a game, जो आप गेम खेल रहे हैं, आपने 15 मिनट 20 मिनट गेम खेली और उसके बाद पता चलता है कि मैं तो कार रेसिंग कर रहा था, मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है, अब मुझे फुल फ्यूल रिफिल करने के लिए either I have to wait for 15 minutes or I have to spend some virtual currency or real currency. So most of the people say यार मैं क्यों पैसे खर्च करूं, मैंने ये फोन रख दिया, 20 मिनट बाद गेम खेल लूंगा. 20 मिनट बाद you get a reminder through a notification your fuel has been topped up, and you could go in your refueled car and you start playing the game for another 10 minutes, and after that 10 minutes you run out of fuel again. So या तो आप इस परेशानी से बचने के लिए पैसे देना शुरू कर देंगे to get the fuel, or you will actually come back every few minutes, or maybe 3, 4, 5 times a day. Any game you're coming back 3, 4, 5 times a day is super engaging, you know, and that super engaging game is worth a lot of money, because if you are glued to a game and you're coming back to the game again and again, you are potentially addicted, and once you're addicted, you are a potential customer for paying money directly or indirectly. So direct money और indirect money हम भी देखते हैं, कुछ लोग ads के through, कुछ लोग
ad rewarded ad videos के through पैसे कमाते होते हैं, कुछ लोग आपसे eventually actual physical money ले लेते होते हैं. But so the game design wala part is going to talk about all that stuff. Third stage is actual game development, जिसको हम कहते हैं. So you turn on your computers and you start working on the creatives, you start working on the 3D models, you come up with the game scenes, you record the audio, you record the music, you put things together, lighting कहाँ लगनी है, दरख्त कहाँ set होने हैं, you actually make the game. So the third stage is usually the actual game development वाली stage, जिसमें हम असल में game बनाते हैं किसी software development, game development engine के through. So there are game engines that we could probably use to make these games today. And the fourth stage is about what to do with the game in the market. So पहला step ये है कि आपने game publish कैसे करनी है, खुद करनी है या किसी publisher के through करानी है. There are companies who publish games for you. उसके बाद फिर how do you promote that game, कहाँ position करनी है, किसके मुकाबले में जाना है, what is you will optimize your game, your app store के ऊपर keyword optimization करनी है, blogging करवानी है, online promotion है, you could probably run some social media campaigns के लिए आपको free gifts मिल रहे हैं, when you go join the game you do this and you do that. Keep an eye on the analytics. Game लोग खेल रहे हैं तो आप नजर रखते हैं कि कितने स्टेज पे लोग जा रहे हैं, कौन से जेम्स लोग रिसीव कर रहे हैं, कितने पैसे लोग कमा रहे हैं, कितनी फिजिकल मनी में पेमेंट लोग कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात. सो गेम ये नहीं है कि आपने गेम बनाई इंटरनेट पे डाल लो, ये अल्लाह का शुक्र है गेम बन गई, जैसे वी आर गोइंग टू गो मेक सम मनी आउट ऑफ दैट. नो, you actually have to push the game and keep an eye on every aspect of the game when it is running. So you continue to sort of tweak the game as well to make sure that it stays engaging and people come back to your game every now and then. So this is usually the game making process. So हमारे जो questions हम देख रहे थे, we talked about what, we talked about why, we talked about how. is how पे अभी मजीद बात भी करेंगे. The question which is left is who makes these games. So let's talk about who makes these games. So let's talk about the roles. I don't know, I may not be using the formal names of these roles, but what we have are generally game designers. Abhi humne game design ki baat ki. So game designers are like the story writers who actually sit down and write the story of the game, characteristics of the people, कौन लोग हैं उस game के अंदर, उन characters की क्या खसूसियात हैं, क्या behaviors हैं, क्या capabilities हैं, environments कौन सी हैं, cities हैं या halls हैं या buildings हैं या. So the whole thing is actually conceptualized by the game designers. So these are separate set of people who may or may not have a tech background, but they will actually have a good game design skill. Similarly, we have a set of artists. So we have artists, we have sketch artists, we have graphic designers, we have 3D modelers, we have animators जो कि animations बना सकते हैं. These are the people. So this is one set of roles. So there are people who are making things to be used in the game. So अगर आपकी कार रेसिंग गेम है तो कारें को डिजाइन करेगा ना, वो ट्रैक्स को डिजाइन करेगा, कारों के ऊपर क्या डीकैल्स लगने हैं, बादल कैसे नजर आने हैं, दरख्त कैसे डिजाइन होंगे, ट्रैक के ऊपर जो एक्चुअल रोड है उसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव in your 3D stadiums in general. फिर अगर आपने garage का scene दिखाना है तो garage design करना है and all that. So basically graphic design, sketch artists, 3D artists who make 3D models, and then animators. So there's so many human and humanoid characters and other 3D objects जो कि animated होते हैं हमारी games के अंदर. So वो उन animations को बनाने के लिए there is a separate role. There are people who are called animators who make these animations for us. At the same time, there are a lot of things that look similar to the movies in the games. So there are people similar in the role as well. So there are people who write the script, literally dialogues and script among the people who are in the game. There are audio specialist artists, vocalists. So there are people who come to an audio studio जिसमें आके वो अपने डायलॉग्स रिकॉर्ड कराते हैं या साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कराते हैं. ह्यूमन डायलॉग जरूरी नहीं है. अगर आपकी
sword fighting game hai, to usme there are going to be groans and oohs and ahs where you're actually fighting the game. Similarly, there are music artists, so there are musicians, there are people who play music, there are people who record music. Sometimes music में भी कोई vocals या song होते हैं, otherwise they're just instrumentals. Some music is only for the introductory video, some music is for the cut scenes जो कि मुख्तलिफ games के बीच में आते हैं. Some music is only for the backgrounds, it's playing and playing and playing in the loop. So music artists are important. As I discussed, voice artists are people who make their voices recorded. और फिर इसमें ऑडियो को यूजुअली हम जो इफेक्ट्स कहते हैं या एफएक्स कहते हैं, दिस मीन्स कि जब आप गेम खेल रहे हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में टकराने से, इंटरैक्ट करने से, चलने से, फिरने से जो आवाज़ें जनरेट होती हैं, वो आवाज़ें रिकॉर्ड करना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन गेम मेकिंग प्रोसेस. Similarly, it's a very significant role of programmers and engineers and coders, and that's where a lot of you people actually come in as well, because I know you guys have been programming in your C++ and Java and Python and other languages as well. So actually when you put things together in a game, programming is very important. Then we have some senior people who are producers, who are managers, who are coordinators, who are directors, because when you make a large game, so when we're talking about large game, let's say we're talking about Call of Duty and the new one, the new one. So if we talk about how long did it take to make Call of Duty and how many people were involved, if you go check the credits, there are hundreds and hundreds of people. पता चला कि जी 600 लोगों की टीम थी जिसने 3 साल काम किया, and they made that game possible. So अगर 500-600 लोग किसी चीज पे काम करें, उनके आपस में इंटरेक्शन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, there should be a management staff who actually makes them talk to one another, and eventually at the end of the day you come to see that the game is in a good shape. Then sometimes we have subject matter experts as well. So if you're making a war game, having some soldier who has probably fought a war on the team is going to make a lot of difference. अगर आप कोई science fiction movie बना रहे हैं या space based movie बना रहे हैं, तो having somebody who has the knowledge of space sciences will be very important. If you're making a strategy game where your countries are fighting for resources and competing against one another, so maybe having people with a political science background could make some sense as well. If you're making a racing game, having some racers or the race managers or probably some team members from some racing teams could probably make a difference as well. So और हो सकता है मैंने इसमें से काफी सारे roles miss भी कर दिए. There are several roles of people who actually get involved in the game. So if you think you want to be part of a game development team, कुछ लोग तो कहेंगे नहीं जी हम तो अकेले बैठ के बनाएंगे, हम तो 3 लोगों का ग्रुप मिलके बनाएगा. Go ahead, do that. Indie game developers or the small teams are always there. But you should also think about what's going to be your role. Is that going to be only engineering and programming, or you want to be a 3D model maker जो कि खुद 3D models बना सके या 3D characters बना सके या 3D buildings बना सके? Yeah, well, you could probably get a 3D character and you want to add animations through that. तो animator का role आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या coordinator का? Yeah, you could write good scripts or you could be a good game designer. It is your decision to make what exact role you want to take from there. तो ये हैं वो मुख्तलिफ roles. So the answer to my fourth question is also done now, that who are the people usually who are part of making a game. So we did talk about what first. सबसे पहले हमने जो बात की थी कि what is a game, and then we talked about why do we make a game. So why पे थोड़ी सी बात और करते हैं क्योंकि हमने बात की थी why do we make a game, because we want to make some good serious money out of this. So maybe I can talk to Hassan about this. Let's make it a little more interactive. Hassan, अगर
आपने गेम बनाई है, आपकी एक गेम है, so what are the ways you could probably make money from the game? उस गेम से पैसे बनाने के क्या तरीके हैं? Obviously, the first platform would be to you can go to, for example, Steam. आप Steam पे put कर सकते हैं. You can also back your project up through Kickstarter. There are Facebook groups जहाँ पे आप monetize कर सकते हैं. And Reddit, I think Reddit is a hit or a miss. So Reddit पे you can your game can either blow up or you can just Acha, it will not a get little any. more techy for maybe somebody who has never thought of what Steam is. So Steam पे जब आप अपनी गेम डाल देते हैं, what is Steam और वो कैसे पैसे बनाती है? Let's keep it What simple is for the general public. okay? Yeah, so Steam is an online platform जहाँ पे आप you have to pay a fee of around $100, and उसके बाद you have to publish your game on Steam. And once you publish your game on Steam, you can Probably sell your game. This is the first thing. Sell your game to consumers. वो लोग जो खुद गेम खेलना चाह रहे हैं, आप उसको सीधे बेच लें. अच्छा, उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? मे बी स्टीम के ऊपर ही कुछ और तरीके होते हैं गेम से पैसा बनाने के. I guess ads के through you can make games in your game. So you can put ads in your game. ठीक हो गया. So ads के जरिए भी आप पैसे बना सकते हैं, और इस ads में भी दो तीन तरीके के ads होते हैं. कुछ नॉर्मल एड्स होते हैं जो सिर्फ आपने देख लिए और क्लिक कर दिया तो पैसे मिल जाएंगे, और कुछ रिवॉर्डेड एड्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि जी आप ये गेम खेलते खेलते ये वीडियो देख लें हमारी, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो हम आपको 50 कॉइन्स दे देंगे, या आपको एक नई स्वॉर्ड मिल जाएगी, या आपकी गाड़ी का फ्यूल फुल हो जाएगा. So ads and rewarded ads is another way of making money. उसके अलावा क्या सीन होता है जी? Well, there is also a business model that AAA companies mostly use. It's called microtransactions. So you actually buy virtual goods from games, and it's quite a popular concept nowadays, especially आज के दिनों में. ये कि आपको गेम्स के अंदर काफी मिलेगी ये चीज कि you have to buy a lot of. खेलते रहे, मैं PUBG नहीं खेली इतनी, लेकिन PUBG आप खेलते रहे? PUBG, no, I have not played. Fortnite खेलते रहे आप? Fortnite, I have an idea. Gameplays देखे हैं मैंने. So there are so many games out there which are fundamentally free to play. So you have the game and you can just go download it and play it for free. But some of the players actually go and buy stuff on the store, right in the game. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करती हैं. आपको नए वेपन्स मिल गए, आपको नई गाड़ी मिल गई, आपको बड़ा घर मिल गया. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे यू जस्ट बाय कॉस्मेटिक स्टफ. नया हैट खरीद लिया, नई वर्दी बना ली, आपकी अपीयरेंस चेंज हो गई, आपका कैरेक्टर चेंज हो गया, आपकी टॉर्च की लाइट चेंज हो गई. लिटरली पीपल पे मनी फॉर दैट. सो जनरली व्हाट आई कॉल इट इज इन ऐप परचेजेस. ये कई तरह की परचेसेस हो सकती हैं. इसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई रियल $5 $2 देते हैं और उससे आपको कोई वर्चुअल करेंसी मिल जाती है, कॉइन्स मिल जाते हैं, जेम्स मिल जाते हैं, फ्यूल मिल जाता है, कंज्यूमेबल्स मिल जाते हैं. कुछ केसेस में आपको अपग्रेड्स मिल जाते हैं, कुछ केसेस में सिर्फ विजुअल सीन नजर आना डिफरेंट हो जाता है. सो आप एक बड़ा ही कूल किस्म का पर्पल शील्ड लेके फिर रहे हैं और लोग हैरान हो, यार इसके पास बड़ी कोई पर्पल शील्ड है, कूल मैन. हालांकि वो शील्ड किसी और की शील्ड से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन देखने में इट लुक्स कूल. सो looking cool is one more aspect where people do that. So all that stuff goes under the in-app purchases. कि आप in-app purchase या in-game purchase कहना चाहिए mainly इसको, कि आप गेम के दौरान कुछ चीजें खरीद सकते हैं. So this is called I don't know, they call it freemium model as well, that it's free to play, but eventually if you want you can either spend 2 days to earn the same coins, or you could just pay them. So अगर वो लोग जो पे करते हैं वो ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं गेम के अंदर. So they also call it pay to win games. इसके अलावा कोई तरीका नजर आता है गेम से पैसे कमाने का?
So इसमें I think मैं इसको इन ऐप परचेजेस में स्लैश डीएलसी भी कर सकते हैं. डीएलसी क्या होते हैं? डीएलसी इज यूजुअली डाउनलोडेबल कंटेंट जो हम कंसोल पीसी की गेम्स में ज्यादा देखते हैं, मोबाइल गेम्स में ज्यादा नहीं होता. उसमें भी यही होता है कि अगर आपको कोई नया वेपन चाहिए या कोई नई गाड़ी चाहिए तो यू कुड. सो रेसिंग गेम हसन कौन से खेलते आए हैं? हैव यू बीन प्लेइंग द मोबाइल रेसिंग गेम्स रिसेंटली? Not the mobile racing games. PC पे ही खेली हुई हैं usually. Like you have Need for Speed, you have Forza Horizon, things like that. So not on the mobile. I don't know Forza. I've been playing Forza and Need for Speed in general. Have you heard of the game Asphalt? Yes, I have. ये usually mobile के ऊपर, it is a very popular racing game in general. And if you think that in-app purchases is not the right model, just imagine that the usual price of a car. So up literally you can play Asphalt, the racing game, on your mobile phone, or maybe अब वो PC पे और बाकी जगहों पे भी आ गई है. And when you go to the store, you could find cars that you could buy and download. So you can buy and download cars, and those cars are ranging from $20 a car to say $200 a car. तो आप $200 की, $100 की, $50 की एक वर्चुअल कार अपनी गेम में खरीद सकते हैं. $50 की कार, लोग $50 की गेम नहीं खरीदते, but they do have that product on the game, means that there are people out there who are actually purchasing those cars. 10-15-20 से कम की तो कार नहीं है उनके पास. So usually we've been thinking कि यार this is some micro transactions that we're talking about कि यार $1 पे या 0.99 पे या $0.5 पे हम कोई चीजें खरीदेंगे, या हम $1 का बंडल खरीद लेंगे जिसमें 2-2 सेंट की बहुत सारी चीजें होंगी. People are actually paying a lot of money when they get addicted to the game. There are some non-traditional ways of making money as well. We will not be talking about a lot of them, but for example, I'm sure हर किसी ने Angry Birds का नाम सुना होगा. And there was an Angry Birds the movie a few years ago. I think 3-4 साल पहले Angry Birds की एक movie भी आई थी. So basically movie launch करके the main direction they had was, the main marketing point they had was कि यार हमारी game बड़ी cool है, तो eventually हमारी movie भी probably will do good as well. So what they do to promote their movie, so the movie was launched and the game was launched at the same time. I downloaded the game and I played level 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. There were like 200 levels, and on level 50, obviously I was addicted. I reached level 50. I got a prompt कि लो जी to unlock your level 51 onwards. मैं कहा लो जी अभी पैसे मांगे. They were not asking for money directly. No. What they said, you have to unlock this rest of the game by going to the cinema, watching the movie, and during the movie or at the end, you will have a certain logo. ये वाला logo नजर आएगा, वो एक bird बना हुआ था. When you see this logo, turn on the microphone. It was asking for the permission for microphone. So the game will listen to the music and will confirm कि हाँ जी ये भाई ने game की movie देख ली है. Movie देखने के बाद you will listen to the music and then the game will unlock. So वो अगले 150 level मैंने काफी कोशिश की मुझे YouTube से कहीं वो music मिल जाए. कुछ लोगों ने वो post भी किया हुआ था, but there were more checks to the game, and they were definitely checking if this guy is in the cinema or not, and that cinema is showing that movie or not, and that is being shown at that particular time or not. And then obviously the music unlocked the game, and I did get those 150 levels. So I did not pay them any money directly to the game, but I went to the cinema, मैंने directly हाथ से ₹5 में cash उनको पकड़ाया, ticket लिया, movie भी देखी, popcorn भी खाए. But at the end of the day, they made some money out of that. Non-traditional, indirect way, a cool way. But yes, there are ways people do that. The first line over here, sell your game to consumer. It's not necessarily that you sell your game to consumer. Sometimes you sell your game, you get your game acquired
So some other company totally buys the rights to your game. Sometimes they're publishers or sometimes they're investors. So हो सकता है कि आप एक ऐसी गेम बनाएं जो कि किसी इन्वेस्टर को अच्छी लगे और आप बजाय इसके कि 2-2, 5-5, 10-10 डॉलर की कॉपीज बेचें, you could make a deal of like hundreds of thousands of dollars or maybe millions of dollars to actually sell the game to somebody else. So these are the main ways of making money with the game. There could be other ways of making games. Maybe it's going to get a little longer for now. We have spent good 40 minutes talking about theory, and we really want to get into the action and make our first game scene right now as well. So I just don't want to delay that a lot. So let's make our first game scene, or I'm sure कि इसी वक्त सबके लिए ये tool download करना तो आसान नहीं होगा. Please stick to the screen, follow my instructions. I'm sure कि ये live webinar और इसकी recording वगैरह later on will be available to you as well if you want to follow these steps one by one later on. But I would recommend कि जैसे ये webinar खत्म हो और आपके पास कुछ time हो तो you should probably try to do this as well. These are not difficult things. So I can tell you, I've been making games for a long time, and I've been making mobile apps for a long time. Actually, there was no iPhone and there was no Android back then. 15 saal pehle. I was making apps for the mobile phones where there used to be Symbians and J2MEs and Midlets and whatnot. And before that, I actually started making some games for the PC as well. Making games was a very difficult task a decade ago. You had to write a lot of code. You had to implement a lot of logic. You had to know a lot of maths and physics. We still need to know some maths and physics even today, but it is getting a little easier. It is simpler. The tools are getting very simple for you to make games. इसी तरह का एक सिंपल टूल हम यूज करेंगे आज की वेबिनार के लिए भी, एंड मे बी सब्सिक्वेंट गेम मेकिंग के लिए भी आप यही टूल यूज कर लें. वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड यूनिटी. इसको यूनिटी या यूनिटी 3D कहते हैं. Unity 3D is, so हम क्यों Unity 3D यूज करने लगे हैं? Number one, Unity 3D is easy, आसान है. Number two, you just go to Unity website and you can download it for free. So for students, for individuals, or somebody who is not making hundreds of thousands of dollars, लाखों डॉलर जब आप बनाने लगेंगे तो फिर Unity could probably come and ask you कि यार you should buy a license, एक paid version आप खरीद लें. Before that, they have announced कि यार I think it's $100,000 a year. Yeah, you can double check on their website. So there is so they give you Unity for free. Okay, Unity हमें मिल गई. Unity करती क्या है? Unity is a software. You install it on your PC or on your Mac. तो आप Windows पे या अपने MacBook पे उसको install कर लेते हैं और उससे फिर आप गेम बनाना शुरू करते हैं. You can set up the scene. You could put things in there. You have objects and vehicles and trucks and buses and airplanes and darakht and buildings and roads, and you make the whole game in there. And once you make the game, then you can use Unity, and Unity is cool enough to make a version for different platforms. So Unity makes platform independent games. Unity से ही आप अपने Android की games बना सकते हैं. Unity से ही आप अपने iPhone की game बना सकते हैं. Unity से ही आप अपने PC के लिए गेम बना सकते हैं और Mac के लिए बना सकते हैं. Even Unity पे ही हम गेम बना के वेब पे पब्लिश कर सकते हैं. किसी वेबसाइट का लिंक लोग खोलें और वहां पे गेम चलना शुरू हो जाए. यहाँ तक कि Unity पे आप consoles के लिए, Xbox के लिए, PlayStation के लिए, and there are several other platforms that are supported by Unity. So this is how cool Unity is. So आज हम मोबाइल फोन पे या उस पे तो कोई सीन बना के नहीं देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सा सीन जरूर हम सेट करने की कोशिश करेंगे. So if you have any questions later on, I don't know, I'm not sharing my email address, but I'm usually okay to receive DMs on my Twitter. So if you follow me on Twitter, I could probably respond over there. So इसके अलावा let me just jump over to Unity now. So अब हम Unity चलाते हैं. बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि गेम सीन कैसे सेटअप होता है, कैसे हम चीजों को उसके अंदर लेके चलते हैं, और आज हम लेट्स सी अगले एक घंटे के अंदर तकरीबन क्या सीन बनाने की कोशिश करते हैं. So I will stop my presentation here and you should be able to see my desktop now. मेरे पास ये Unity का एक थोड़ा सा पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड है, बट यू कुड जस्ट गो टू Unity एंड गेट द लेटेस्ट वर्जन व्हाटएवर यू हैव. इसका डाउनलोड प्रोसेस थोड़ा लंबा है. I'll probably share some links with you guys.
लेटर ऑन जहाँ से आप ये डाउनलोड या छोटा सा ट्यूटोरियल भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने खुद ही बनाया था कि यूनिटी डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. सो लेट्स स्टार्ट यूनिटी. और अब हम बनाने लगे हैं एक बेसिक सिंपल सीन. हमारी इस प्रोसेस का या इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि नंबर 1, to give you a feel कि यार game making is not a big deal. As a developer, you could actually use Unity to make games easily. थोड़ा सा हम ओवरऑल फील देखेंगे कि टूल कैसे चलता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होते हैं, 3D में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, स्केल करते हैं, रोटेट करते हैं, और फिर हम एक छोटा सा सीन सेटअप करेंगे which actually looks like a game. So let's start Unity. Step 1. I start this tool, this software called Unity. So it starts like any other software. And I make a new project. ये कुछ projects मेरे बने पड़े हुए हैं. I will just make a new project. इसमें options हैं, आप 2D games भी बना सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं, और भी options हैं. I'll just go for a 3D game. And I will call this my test game. ये वैसे मेरे project का नाम होगा. Unity में जब आप एक project बनाते हैं तो एक folder बनाता है और उसमें कुछ files पहले से place कर देता है आपकी आसानी के लिए. We will not need to know a lot of those files कि वो क्यों बनी हुई है और उसके अंदर क्या है. So I will call it my test game and click on create. We'll have to wait for a few moments. It is setting up your scene. Okay, so ये है हमारी यूजुअल यूनिटी की स्क्रीन. इसका हम डिफॉल्ट लेआउट करते हैं. दिस इज हाउ योर यूनिटी लुक्स लाइक. अब आपको बीच स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कुछ ऐसी सूरत हाल है जैसे नीचे कोई ग्रे हालात हैं, ऊपर कोई नीला आसमान है. दिस इज कॉल्ड द गेम सीन. बाय डिफॉल्ट ये हमारा गेम सीन है और इसमें हम अपनी चीजें प्लेस करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स प्लेस करेंगे और उनको अरेंज करेंगे और फिर बाद में उनको एनिमेट करेंगे और मूव करेंगे. So this is my Unity tool. So I'm sure ये थोड़ा सा छोटा होगा font wise आपको देखने के लिए. I could probably zoom in. And ये जो scene की window है, इसमें ऊपर देखेंगे हमारे पास एक scene window है, एक game window है. Left पे हमारे पास कुछ toolbar buttons हैं. ऊपर center में हमारे पास play का button है. Right side पे एक window है जिसका नाम inspector है. इस inspector में actually आपके objects की properties वगैरह आएंगी. और अगर मैं नीचे चला जाऊं तो नीचे एक विंडो है जिसको हम एसेट्स का फोल्डर कहते हैं या ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल यूज वन बाय वन. लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये सैंपल सीन इसने खुद ही बना दिया है. सो ये जो ब्लू स्काई और ग्रे बेस है, ये हमारा करंट सीन है, यानी ये खाली सीन है, इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं. देयर इज अ मेन कैमरा एंड देयर इज अ डायरेक्शनल लाइट. और इन पे जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि ये मेन कैमरा यहाँ से कुछ सिलेक्ट सा हो रहा है, और डायरेक्शन लाइट पे मैं क्लिक करता हूं तो एक लाइट, ये सूरज टाइप चीज है, ये एक आइकन है सूरज का, ये मेरी लाइट है. सो कैमरा इज गोइंग टू बी द प्लेस जहां से आपको गेम के अंदर सीन की चीजें नजर आएंगी. अभी कोई चीज भी नहीं है. अगर मैं टॉप सीन के साथ ही गेम टैब पे चला जाऊं तो आप देखेंगे कि ये सूरत हाल है. जब मेरी गेम चलेगी तो ये खाली दुनिया नजर आएगी जिसमें नीचे ग्रे और ऊपर ब्लू है. सो दिस इज हाउ योर यूनिटी स्टार्ट्स. आपके यूनिटी का बिगिनिंग के हालात ये होते हैं. आपका खाली सीन मिलता है आपको जिसमें एक कैमरा है और एक डायरेक्शन लाइट है. सो ये कैमरा हमारा यहाँ प्लेस्ड है और ये डायरेक्शन लाइट है. ऑल्सो जब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ या लाइट पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी. इस पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं. ये जो राइट साइड पे हमारे इंस्पेक्टर है, this inspector is getting इसके transforms हैं, इसकी light की properties हैं. So every object will have different properties. Light की बजाय अगर मैं कैमरा देखूं तो इसमें कैमरा की properties हैं, light की properties नहीं है. इसमें audio listener भी लगा हुआ है. So every object that will be in this scene will have their properties placed on the right in the inspector. So अभी हम बजाय इसके कि कोई complex चीजें डालें, I would like to add a few objects to the scene. So for example, I go into the menu, game object, के ऊपर file, edit, asset, game object के menu में से in 3D, I will go and get a cube.
जैसे ही मैं क्यूब पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्चुअल क्यूब, एक डब्बा, एक 3D क्यूब प्लेस हो गया है. Let me zoom out here and zoom in here. So I'm sure everybody can see this. आसानी यूनिटी वाला व्यू सबको सही नजर आ रहा है? आपको सही नजर आ रहा है? You could see the box in the scene. Yes, sir. We can. Good. So when I select this box या select this light या select this camera, आप देखेंगे कि 3 arrows नजर आते हैं मुझे, red, blue और green. So I select this box. इसको हम put it on. So ये हमारा डब्बा है जी. और इस डब्बे पे जब मैं क्लिक करता हूं तो हमें 3 एरोज नजर आते हैं. So as it is a 3D game, remember 3D, what are the 3 dimensions that we're talking about? अब बिल्कुल वैसे जैसे हम स्कूल में ग्राफ बनाया करते थे, उसमें एक एक्स एक्सिस होता था राइट से लेफ्ट और एक वाई एक्सिस होता था ऊपर से नीचे. So बिल्कुल वैसे ही, let me change my camera, it could probably give you a better expression. So your right and left is your x axis and your top and bottom is your y-axis in general. So ये हम आम तौर पे अपने 2D के अंदर काम करते हैं. In your 2-dimensional पेपर के ऊपर जो ग्राफ पेपर हुआ करता था, उसके अंदर हम ये काम करते होते थे. So हम क्या बात करने लगे? We're talking about 3 dimensions. So x-axis is my right and left. So assume I am in a 3D room right now. So we live in a 3D world. So my current position is 0, 0, 0. So मैं किसी x, y, z axis पे 0 पे बैठा हूँ. If I move to my left or if I move to my right, if I move to my right and left, my x axis will change. If I go down or if I rise up, so my up and down is going to be my y axis. So दाएं बाएं, right and left is x-axis, up down is y-axis, and if I come closer to you or go far away from you, this is going to be my z-axis, z-axis. बिल्कुल ऐसे बॉक्स को करके रेड एरो से मूव करूं तो दिस इज चेंज इन, एंड इफ आई मूव इट विद द ब्लू वन, द ब्लू इज जेड एक्सिस, जो आगे पीछे. And I went into the inspector. इंस्पेक्टर में आप देखते हैं कि इसकी पोजीशन है 0, 0, 0. आई कैन मूव द बॉक्स एंड यू कैन सी कि इसका x जो है ये कम हो रहा है. लेफ्ट पे जाएगा तो कम हो रहा है, राइट पे जाएगा तो x की वैल्यू ज्यादा हो रही है. सो मैं इसको x 0 पे ही रखूंगा ताकि ये सेंटर में रहे. इसी तरह y को अगर मैं चेंज करूं तो y पॉजिटिव करने से ये ऊपर जाएगा बॉक्स और y नेगेटिव करने से नीचे जाएगा. इसी तरह अगर मैं z को मूव करूं, पॉजिटिव में z डब्बा आगे जा रहा है और नेगेटिव में इट इज गोइंग बैकवर्ड्स. मेक सेंस जी? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हसान, ठीक लग रहा है काम? अगर कोई क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड गाइस. रेज हैंड ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी फॉर द क्वेश्चंस एज वेल. सिमिलरली इसी बॉक्स को, अगर मैं इस बॉक्स को मूव कर सकता हूं तो मैं किसी और ऑब्जेक्ट को भी कर सकता हूं. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस ऑप्शन हियर. इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ टॉप पे मैंने कुछ आपको बटन्स दिखाए थे कि हाथ वाला बटन है, ये एक 4 एरोज वाला बटन है. इस पे मैं अगर माउस ओवर करूं तो यू विल सी इट्स अ मूव टूल. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस मूव टूल टू मूव द बॉक्स. देन वी हैव दिस टूल व्हिच इज कॉल्ड अ रोटेट टूल. व्हाट डज द रोटेट टूल डू? It will actually rotate your box. So if I click on the rotate tool, रोटेट टूल दबाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे डब्बे के ऊपर ऑन माय बॉक्स देयर वर 3 एरोज. दोस एरोज red, green and blue have changed to 3 circles now. They're literally circles. So I can hold on this blue. So let's start with the red one, x axis. इसको अगर मैं पकड़ूं तो आप इस बॉक्स को x axis के अराउंड घुमा सकते हैं.
इसी तरह अगर मैं ब्लू वाले को पकड़ के क्लिक करूं और थोड़ा सा मूव करूं तो you will see the same box is rotating on the y-axis, around the y-axis, and when I use the blue one it is rotating around z-axis. तो तीनों एक्सेस पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं. रोटेट के अलावा एक और टूल हम देखते हैं, this is called the scale tool, जिसको आम आसान जुबान में हम resize tool भी कह सकते हैं. So I click on that and I can change the size of the box in x-axis. You can see it becomes a very wide box. Yeah, I can use the y-axis to make it a very tall box, or I could use the z-axis to make it a very deep or depth wala long box. So ये rotate, translate और scale के जो tools हैं, these are very interesting three tools जो हम use करते हैं for putting our objects in place. And जब गेम बना रहे होते हैं तो जाहिर आपने ये बताना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ होगा, कौन से ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, वो सारी चीजें हम इसकी मदद से कर लेते होते हैं. Now, so let's try a few more things before we start putting things together. यहाँ पे जैसे कि ये डब्बा हमारे पास है, इस डब्बे को मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ. कुछ बेसिक शेप्स हैं जो यूनिटी में अलाउ करता है. I will zoom in a little to show you कि गेम ऑब्जेक्ट्स में से 3D में से I could probably क्यूब की बजाय I can get a sphere. When I get a sphere, you will see कि ये हमें एक sphere मिल गया. We have this ball. So this is the sphere I have. इस sphere को भी मैं थोड़ा सा पीछे हटा देता हूँ. I could go into the game object and get a 3D object, which is a capsule. So you can get a capsule here as well. So the capsule is a elongated cylinder with round top and round bottom. But you can also get something which is called a cylinder. And how this cylinder is different from the capsule, that it has a yeah. So you can see that capsule has a round top and bottom, cylinder has a flat top and bottom. Similarly, we could go for planes. This is a flat thing that you could put in your game. You can increase the size. So now what you can see in the scene right now is I have a capsule, I have a cylinder, I have a sphere, I have this cube, and I also have this flat thing at the bottom which is called the plane. शेप्स हैं जो यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है और इसकी मदद से हम कुछ चीजें बना सकते हैं. मे भी अभी बना के भी देखते हैं. My next point is, can you see the shadows? मजे की बात यह है कि हमें ऑलरेडी इस बॉल का शेडो भी नीचे नजर आ रहा है, right here. Similarly, I can see the shadow of the capsule, shadow of the cylinder, even shadow of the. So you don't have to do anything with the lighting and shadows in general, but you can have those settings done. For example, ये shadows क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये light है. अगर मैं इस light को यहाँ से delete कर दूं, तो पूरे scene में अंधेरा छा जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा. So we really need this light. Also, we can also move the light and rotate the light. तो अगर मैं light को rotate करूं, तो ऐसा ही है जैसे जमीन के गिर्द सूरज घूम रहा हो और इस लाइट की डायरेक्शन वैसे ही होगी. सो अगर तकरीबन सनसेट वाला माहौल हो तो यू विल सी कि ये शैडोज बड़े ही टॉल हो जाएंगे. सो दिस इज टॉल शैडोज सनसेट और सनराइज टाइम. और इफ यू वांट टू गो फॉर द मिड डे, सो ये दोपहर को 12 बजे के 1 बजे के करीब, when the sun is right on the top. This is like 3 o'clock in the evening or something. So आप इस डायरेक्शन लाइट को सन की तरह रोटेट भी कर सकते हैं. इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है. यहाँ इस लाइट को सिलेक्ट करके, so मैंने यहाँ लेफ्ट से लाइट सिलेक्ट की है, यहाँ से लाइट सिलेक्ट की. यू कैन ऑल्सो गो टू द इंस्पेक्टर. सो ये जो भाईजान इंस्पेक्टर हैं, आ गया जी मेरा इंस्पेक्टर. ज़ूम आउट, या समथिंग लाइक दैट. तो जब आप यहाँ से देखेंगे जूम के साथ, तो इंस्पेक्टर में इस लाइट की प्रॉपर्टीज आ रही है. आई कैन चेंज द लाइट कलर के, यार लाल आंधी आ रही है तो
red light we have. So it's not the white light, it's a red light. Or we can change the shadow to, let's say, the orange light or the greenish light or the bluish light or the magenta light. This looks weird, but iski agar intensity aap काम कर लें तो it actually does look something somewhat natural. We do have sometimes lights like these in different weather. अगर हम इसी लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ इंटेंसिटी की ऑप्शन थी तो ये बहुत ही इंटेंस लाइट है, वेरी शार्प लाइट, या वी कुड मेक इट लेस सो इट इज डल लाइट, डिपेंड करता है कैसी लाइट आपको चाहिए। जनरली वन इंटेंसिटी इज फाइन। इसी तरह वी ऑलरेडी हैव शैडो टाइप्स एज वेल, कि इस लाइट से बाकी ऑब्जेक्ट्स के क्या शैडो बनेंगे। करंटली इट इज सेइंग इट इज अ सॉफ्ट शैडो, आई कैन मेक इट अ हार्ड शैडो एज वेल। तो अगर आप करीब से देखें तो अब these are very strict hard shadows which is not very natural. I can change to soft shadows which are a little more blurry, or I could also choose for no shadows. अगर मैं इसको no shadows कह दूंगा तो ये लाइट तो जलती रहेगी लेकिन shadows नहीं आएंगे। This is how simple it is to set up lights and shading in Unity. इसी तरह बहुत सारे गेम सीन्स के ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप इन बेसिक शेप्स की मदद से बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई कैन गेट रिड ऑफ द सिलेंडर एंड क्यूब। अब मेरे पास ये एक अदद स्फेयर है, ये बॉल है मेरे पास एट पोजीशन 0, और मेरा ग्राउंड भी। सो ये मेरी फ्लैट चीज है ना, इसको मैं ग्राउंड बनाने लगा हूं, और ये मेरी बॉल है। So I want to resize this to something large. So let's say it's like 10 by 10 thing. It's a huge ground. I want to make it look like a grassy football ground, for example. So इसको ऐसे बना लेते हैं, और इस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में ये छोटी बॉल है हमारे पास, और वही लाइट है और वही कैमरा है। Before I can make it a ground, I want to use these 3 buttons in the middle. Actually, the first button here, ये जो play का बटन है, अगर मैं अपनी गेम में play का बटन दबाऊं तो आपको कुछ ये सूरत हाल नजर आ रही है। Oh, this is the same ball we have, right? और बॉल के नीचे now we have a flat ground जो हमने ऐड किया हुआ है। ये बॉल ऐसे क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इस बॉल के पास, इस गेंद के पास यहाँ पीछे ये कैमरा पड़ा हुआ है। जब आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आपको प्रीव्यू भी नजर आता है। सो दिस कैमरा इज कैपेबल ऑफ शोइंग यू द बॉल। सो इस कैमरे की ये डायरेक्शन नजर आ रही है। अगर आप इस कैमरे को भी रोटेट कर दें तो ये इस तरह से बॉल को साइड पे भी दिखा सकता है। सो अब जब मैं इसको रन करूंगा, ओहो मेरा कैमरा तो उधर घूम गया। कैमरा अगर उधर घूम गया तो बॉल पीछे रह गई। सो आई विल मेक द कैमरा बैक हियर। तो प्लीज नोट कि ये जो गेम सीन हम बना रहे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स डाल के देख रहे हैं, ये तमाम सीन्स जो हैं ये डेवलपमेंट के दौरान है, ये डिजाइन के दौरान है। जब आप ये सीन सेटअप कर लेते हैं फिर आपको ये सीन नजर आता है जो कि आपकी यहाँ से हमने देखा था। ये सीन विंडो है, ये गेम विंडो है, ये सीन विंडो है, ये गेम विंडो है। There are other layouts you could use to see these windows as well. All right, so now what I want to do is, ये बहुत ही बोरिंग किस्म का ग्राउंड है और ये बहुत ही बोरिंग किस्म की गेम है। मैं अपनी यूनिटी को करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने कुछ इंटरनेट से वैसे ही इमेजेस डाउनलोड करके रखे, जेपीजी फाइल्स है। फॉर एग्जांपल ये मैं खोलूं तो आसान ही क्या लग रहा है? यू कैन सी दिस इमेज। Yes, it's a grass texture. तो इट इज अ स्क्वायर जेपीजी इमेज फाइल जो कि घास देखने में लगती है ऊपर से। अब मैं क्या करूंगा, आई विल लिटरली ओपन माई यूनिटी, इसको थोड़ा सा मैं राइट पे लेके जाऊंगा, और नीचे जो हमने ये एसेट्स का फोल्डर देखा था ये वाला, इसमें आई विल ड्रैग दिस ग्रास एंड ड्रॉप इट हियर। वैसे भी आप दूसरे तरीके भी इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये घास का टेक्सचर यहाँ पे अवेलेबल हो गया। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, इन माय सीन व्यू जहां पे ये हमने
बॉल डाली थी या जहां पे ये मैंने मैदान डाला था, यहाँ पे आई विल ड्रैग दिस ग्रास एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, एंड व्हेन आई ड्रॉप इट, the image has been placed on this whole square plane. Flat surface थी, उस पे घास लगी. अब this looks nice, but the problem is कि घास का image जो था वो तो काफी छोटा था. So when I open this, आप देखेंगे कि ये इस तरह की घास है. ये तो कोई ऐसा लग रहा है कि 1 फुट by 1 फुट जमीन पे लगी हुई है. यहाँ पे ये पूरे स्टेडियम पे इतनी बड़ी घास लगी, which does not look very nice. So मैं क्या करूंगा कि इस ग्राउंड की प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं, राइट साइड पे देखेंगे, मैं जरा जूम इन करके आपको दिखाऊंगा इंस्पेक्टर में क्या क्या आ रहा है. इंस्पेक्टर में इसकी पोजीशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है. नीचे यहाँ पे ये ग्रास का टेक्सचर आ रहा है. एक्चुअली इस टेक्सचर में अगर आप देखें तो इसमें कुछ टाइलिंग की ऑप्शंस आती हैं, यानी कितनी दफा कितनी विड्थ में और कितनी हाइट में उसको टाइल यानी रिपीट करना चाहते हैं. सो अगर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की मेरी विड्थ जो है ये 6x10 है, तो मैं इसकी टाइलिंग भी 6 टाइम्स और 10 टाइम्स कर देता हूँ. 6 और 10 टाइम्स रिपीटेशन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये घास काफी बेहतर लग रही है एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन. अगर मैं गेम व्यू में देखूं तो भी ये घास बेहतर है. आप इसकी एडजस्टमेंट बढ़ा के देख सकते हैं. यू कैन मेक इट लाइक let's say 12 by 20. ये और बारीक घास बन गई. So I think 6 by 10 is fine. 12 by 20 is even better. So जब मैं गेम को अब प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास नीचे घास है, ऊपर आसमान है और बीच में ग्रे कलर की कोई मार्बल टाइप बॉल नजर आ रही. All right, let's. And I go to the game scene. So this is my game scene again. अब घास तो ठीक ठाक लग गई है. इस बॉल का क्या किया जाए? इस बॉल पे टाइप शेप आनी चाहिए. Once again मैंने एक आध JPG और Google Images सर्च करके रखी हुई है. And this looks like the outer surface of a football. So वो images जो हम 3D objects के ऊपर लगाते हैं उसको गेम डेवलपमेंट में हम टेक्सचर कहते होते हैं. इट इज अ टेक्सचर दैट वी आर अप्लाइंग ऑन टू अ सर्फेस इन अ गेम. वेरी इजीली इस फुटबॉल के इमेज को भी मैं अपने यूनिटी के फोल्डर में यहां ड्रॉप करूंगा पहले. तो आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉल का टेक्सचर सारा फुटबॉल की शक्ल का हो जाएगा. बॉल पे ले जाके जब मैं ड्रॉप करूंगा, you can see this looks like a very decent football now. Woohoo, this looks good, huh? So when I run this game now, it shows me a ground and there is a football flying. क्यों हसन, अब क्या करना चाहिए? इस फुटबॉल को ये हवा में तो नहीं उड़ना चाहिए. Rigid body. Yeah, so for general public, once again, Hassan is getting a little too techy with that. We want this ball to drop down. हवा में तो नहीं उड़ती रहेगी ना, इस बॉल को नीचे गिरना चाहिए. और इस बॉल को नीचे गिराने के लिए वो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते होते थे that every rigid body has a mass and it is affected by the gravity. So बिल्कुल ऐसे ही मैं इस बॉल को क्लिक करूंगा और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसका टेक्सचर भी है, इसका ट्रांसफॉर्म भी है. इसमें हम एक नई चीज ऐड करना चाहते हैं. सो आई जूम इन. इसके इंस्पेक्टर में नीचे 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 जाके देयर इज अ बटन ऑफ ऐड कंपोनेंट और यहाँ पे जैसे हसन ने हमें सजेस्ट किया कि एक रिजिड बॉडी ऐड होना चाहिए. रिजिड बॉडी में आप देख सकते हैं इसका एक मास 1 यूनिट है, इसका ड्रैग 0 है. हमने जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसको हम चेंज नहीं करेंगे. एंड यू कैन सी कि यूज ग्रेविटी पे भी टिक लगा हुआ है. इस यूज ग्रेविटी के टिक से क्या होगा कि व्हेन वी रन दिस गेम the ball is supposed to get affected by the gravity and should go down in the y-axis. क्योंकि x, y, z are already defined, तो y जब इसका माइनस में जाएगा तो वो नीचे गिरेगी. इसको मैं रन करता हूँ गेम को and you can see that after running the game the ball has dropped down on the ground. दोबारा करके देखते हैं, बल्कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो जब गेम चलेगी तो ऊंचाई पे बॉल है. And when I run this game the ball drops down.
अब जब बॉल नीचे गिर रही है तो इट इज डूइंग द ग्रेविटी थिंग जस्ट फाइन, बट आई एम लिटिल मोर कंसर्न्ड अबाउट द बिहेवियर कि ये ऐसे नीचे गिर रही है जैसे ये कोई 50 kg का स्टोन हो. इट इज नॉट बाउंसिंग एट ऑल, हालांकि फुटबॉल इज अ सॉफ्ट बाउंसिंग मटेरियल. सो अब हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू मेक दिस बॉल बाउंस अ लिटिल. ओके, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिक्स में. आपने देखा अभी तक हमने बॉल बना ली, मैदान बना लिया, ग्रेविटी आ गई, बॉल गिरना शुरू हो गई. अब हम इसमें एक चीज ऐड करते हैं. आई विल राइट क्लिक नियर द ग्रास, जूम इन कर लें ताकि आप लोगों को नजर आए. क्रिएट, और इसमें काफी सारी चीजें हैं, मटेरियल, लेंस फ्लेयर, सीन, स्प्राइट, एटलस वगैरह वगैरह. इसमें मुझे फिजिक्स मटेरियल चाहिए एक. आई विल ऐड अ फिजिक्स मटेरियल. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिजिक्स मटेरियल ऐड हो गया. इसका नाम मैं बाउंसी मटेरियल कर देता हूँ. सो आई हैव दिस फाइल कॉल्ड बाउंसी मटेरियल, और इस पे राइट पे जब मैं इंस्पेक्टर में जाऊंगा तो इसकी करंट प्रॉपर्टीज कुछ यूं हैं. यू कैन प्ले अराउंड विद दीज. इस बाउंसीनेस को मैं कर दूंगा मैक्सिमम, जो कि 1 है. इसी तरह बाउंस कंबाइन को भी आप चेंज करके देख सकते हैं. मे बी आई कैन मेक इट मैक्सिमल. और अब ये जो मटेरियल फाइल मैंने बनाई थी, मैं अपनी गेंद में जाके, इस बॉल में जाके, I will drop this bouncy material on this ball as well. अब देखने में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये बाउंसी इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया. ओके, व्हाट डज दैट मीन? अब जब मैं इस गेम को रन करूंगा, you will see that the ball is actually bouncing. बल्कि ये कुछ ज्यादा ही बाउंस कर रही है, और बाउंस करने के बाद रुक भी नहीं रही है. इंटरेस्टिंग. सो इसका मतलब ये कुछ ज्यादा बाउंसी हो गया. इसकी बाउंसीनेस हम थोड़ी सी 1 की बजाय 0.9 कर देते हैं, 0.8 कर देते हैं. इसकी प्रॉपर्टी से आप थोड़ा सा खेलें, फिर यू विल रियलाइज कि हाँ यार, ये बाउंस करते करते इसकी बाउंस कम हो गया, और इवेंचुअली इट स्टॉप्ड बाउंसिंग आफ्टर अ व्हाइल. हमने देखा कि हमने बॉल बनाई, हमने ग्राउंड बनाया, उस पर घास लगाई, बॉल पे कलर चढ़ाया, उसको ऐड की, उसको बाउंसी बनाया. एक लाइन का कोड नहीं लिखा हमने अभी तक. All this stuff is being done by Unity, the great tool that we have for making games for us. All right. So ये तो हमने थोड़ा सा देखा कि ना सिर्फ ये कि ये ग्रेविटी काम करती है, बल्कि फ्रिक्शन भी काम करती है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन भी काम करेगा. सो फॉर एग्जांपल, इस बॉल के नीचे बहुत ऊपर ले जाते हैं, और इस बॉल के नीचे अगर मैं एक और क्यूब बना देता हूं जिसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये नीचे से इसको. सो व्हाट आई हैव डन इज, आप जरा करीब से देखें तो पता ही चलेगा कि ऊपर बॉल है और नीचे ये डब्बा है. एंड द चांसेस आर कि जब बॉल ये नीचे आएगी तो ये डब्बे के ऊपर यहाँ टच करेगी ऑन द सरफेस. सो जरूरी नहीं है कि, सो आई कुड प्रोबब्ली मेक द रोटेशन 0. या सो डब्बा 0 पे सीधा ही कर देते हैं. अब क्या होगा कि ये बॉल जो है, ये जमीन पे जाके लैंड करने की बजाय, मैंने रन द गेम, ये बॉल जमीन पे लैंड करने की बजाय इस डब्बे पे बाउंस करना शुरू कर देगी. सो ये जो डिफॉल्ट में हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कोलाइडर. अगर मैं इस डब्बे की प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं तो इसमें एक बॉक्स कोलाइडर पहले से है. या अगर मैं आपको इस स्फेयर की प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो इसमें ये स्फेयर कोलाइडर पहले से है. Collider क्या करता है? It does the mathematics for you and the physics for you for the collision of the objects which could probably collide together. All right. अब मैं क्या करता हूँ, इस डब्बे को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं. इसका मतलब ये कि डब्बे पे जब बॉल लैंड करेगी तो डब्बा बिल्कुल सीधा नहीं है. तो जब मैं इस गेम को रन करूंगा तो बॉल डब्बे पे लैंड करने के बाद उसके टेढ़े होने की वजह से इस तरफ घूम के आ गई, और एक्चुअली हमारे सर पे आके लगी. सर पे नहीं लगी, एक्चुअली देयर वाज अ कैमरा. और अगर मैं सीन में जाके देखूं तो बॉल अभी भी कैमरे के पास से होती हुई रोल करके वो उधर दूसरे एंड पे पहुंच गई है. एंड इट इज स्टिल रोलिंग एंड इट इज स्टिल रोलिंग एंड इट इज. सो व्हाट इज मेकिंग दिस थिंग रोल? वो एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से उसमें ऐड हुई, और वो फिर आप देखेंगे ये ग्राउंड से नीचे चली गई. और ये अगर मैं गेम स्टॉप नहीं करूंगा तो हमेशा हमेशा के लिए ये बॉल नीचे जाती नजर आएगी आपको. सो द ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद वन अनदर. और अगर मैं
इस ऑब्जेक्ट को और ऐसे ही एक और क्यूब को आसपास रख दूं एक दूसरे के, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने 2 क्यूब रख लिए हैं मेरे पास। और मेरा कैमरा किधर है? कैमरे में से तो अब नजर नहीं आएगा क्या हो रहा है। सो कैमरे को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब जब हम गेम को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दफा वो उधर वाले बॉक्स पे टकराएगी और फिर इधर आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचुरली एक्चुअली 2 बॉक्सेस के ऊपर ये बाउंस कर रही है। द बॉल विल बिहेव एग्जैक्टली द सेम। इसका बाउंस थोड़ा कम हमें मिला, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मूव दीज बोथ समवेयर ओवर हियर, ताकि ये एक दूसरे के करीब आ जाए। और जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो बॉल विल एक्चुअली बी फ्लोटिंग अराउंड। सो कैमरा किधर है जी? This is what my camera shows. इसको थोड़ा सा करीब करते हैं। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो बॉल विल बाउंस ऑन वन ब्लॉक एंड देन ऑन द अदर ब्लॉक एंड देन द फर्स्ट ब्लॉक वापस। सो अब ये बिकॉज 2 स्लैंटेड ब्लॉक्स हैं तो उसके ऊपर ये रोल करते रहेगा जब तक इट एक्चुअली कम्स टू इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टॉपिंग दिस थिंग? आपने देखा था कि इस बाउंसी मटेरियल के अंदर there was dynamic friction added। तो ये फ्रिक्शन अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर ये ऐसी रोल करता रहेगा। Before we change the scenario of the game a little, I can also move the camera। अब ये गेम वैसे ही है, डब्बे वैसे ही लगे हुए हैं, बॉल वैसे ही है, लेकिन मैं अपना कैमरा मूव करके थोड़ा एक डिफरेंट एंगल पे ले जाता हूँ। And I've placed the camera on the side now। So आप गेम में देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कैमरा प्लेस कर दिया। अब जब मैं गेम को रन करूंगा तो कैमरा विल रिमेन हियर एंड यू विल सी थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ऑलरेडी हालांकि बहुत सिंपल सा सीन है और बहुत सिंपल सी गेम है, और एक्चुअली गेम भी है भी नहीं, अभी तक इंटरैक्टिविटी आई भी नहीं है इसमें, लेकिन यू कैन सी कि यू ऑलरेडी फील कि यार लाइट कुछ सही नहीं पड़ रही, बॉल के ऊपर शेडो नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है आपका कैमरा यहाँ पे है और लाइट वहां से नजर आ रही है। सो लाइट को किसी ऐसे एंगल पे चेंज करना चाहिए कि बॉल का ये वाली साइड रोशन नजर आए। सो आई कुड गो टू द लाइट एंड आई कैन ट्राई चेंजिंग सम एंगल, कुछ इस तरह, मे बी इस तरह। नाउ यू विल सी कि इसका शेडो परली तरफ पड़ रहा है। एंड व्हेन आई रन द गेम, ओह द गेम वाज रनिंग, टू बैड, आई नीड टू गो टू दिस अगेन। So I can change the direction light in this way, something like that। अब जब आप गेम चलाएंगे तो शेडो परली तरफ पड़ रहा होगा और बॉल के ऊपर यू कैन सी के काफी बेहतर रोशनी पड़ रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ऑल्सो चलती गेम में ही अगर मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं इस डब्बे को मूव करूं तो क्या होगा। So if I could probably move like this, the ball will बॉल को अगर मैं इसमें कुछ कोड लिख देता हूँ और ये बॉक्सेस मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये बॉक्सेस एक्चुअली आर इंटरैक्टिंग एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल गेम में इनको करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, विद रिस्पेक्ट टू द बाउंसीनेस, विद रिस्पेक्ट टू द कोलिजन। सो ये कोलिजन वगैरह ऑलरेडी इसमें हो रहा है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी के ध्यान में हो बिफोर वी ट्राई टू चेंज दिस गेम सिनेरियो अ लिटिल? Do we have any questions? I can see good 50 people in the session, at least on the meet right now, and more people on the social media. No questions जी, आगे चला जाए। Sir, no questions so far, I think, so you can continue. वंडरफुल जी। अच्छा, अब हम इस सिनेरियो को, इसी गेम सीन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्लीज नोट कि ये तो वो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास बने बनाए यूनिटी के अंदर मिल जाते हैं। अब हम कुछ ऐसी सिनेरियो में देखेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम अपनी गेम में इंपोर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 3D डिजाइनर्स आउट देयर, मॉडलर्स आउट देयर जो 3D मॉडल्स बनाते हैं और वो मॉडल्स आपके लिए अवेलेबल कर देते हैं। कुछ केसेस में वो फ्री होते हैं, कुछ केसेस में वो पेड होते हैं, तो आप पैसों की चीजें खरीद के अपनी गेम में ऐड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर जो कि
जिनके अगेंस्ट से काम किया जा सकता है, जहां से ये मॉडल्स आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिटी का अपना एक एसेट स्टोर है। सो आप अगर अपनी यूनिटी में विंडो पे क्लिक करें और एसेट स्टोर, विंडो एसेट स्टोर दबाएं, तो एक यूनिटी के अंदर ही एक सॉर्ट ऑफ वेबसाइट टाइप खुल जाएगी राइट इन द मिडल। जैसे ही सब लोगों को, जैसे ही नए डेवलपर्स को इस एसेट स्टोर के बारे में पता चलता है, वो धड़ाधड़ बहुत सारी चीजें डाउनलोड करके देखते हैं। सो ये लिटरली दिस इज अ ब्राउजर वेबसाइट इनसाइड योर यूनिटी, और इसमें आप बने बनाए कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट probably browse the categories here. इसमें अगर मैं categories आया करती थी इस जमाने में, see the top selling, top free, on sale. I can go for the top free. So what are the top free models? ये Unity का asset store है हमारे पास, natural starter kit है हमारे पास, आग है, धमाके हैं, explosions वगैरह हैं. So if I probably download something for you guys, they have just changed the, I click on the 3D assets. So 3D assets में आप देख सकते हैं right side पे, you have option of getting the animations, characters, animals के अलावा, still loading, sorry, creatures, humanoids, robots, graphical user interface के ऊपर buttons वगैरह भी मिल सकते हैं आपको, environments मिल सकती हैं, props मिल सकते हैं. So for example, if I click on the animals, it will start showing me animals. So this horse with animation is $60. This realistic wolf is like $60. These animals are, animal set is $25. This cool horse is $60. These animal loin pack is $180. That is a lot of huge amount. So I'll look for something free. So I will set the filter to $0, and then let's see कि कोई animal हमें जिंदा मिलता है कि नहीं मिलता. So we have some cartoonic fox and dog night, and we have some birds, and we have not a very realistic but a tiger. I don't know, मैंने ये कोई इनमें से download करके देखा तो नहीं है, but I could probably try downloading this tiger, for example. So you click on the tiger and you click on the download. I hope it is not too big. Achha, one thing we need for asset store to work, one thing we need for Unity to work is your Unity ID. So what I'm going to do is I'm just going to log on into that, and I'll intentionally save my, on that, sorry about that. So आपने अपना यूजरनेम पासवर्ड डालना है, और अगर आपके पास यूजरनेम पासवर्ड नहीं है तो आप सिंपल unity3d.com पे जाइए, और वहां पे वो आपको फ्री में अकाउंट बना देते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता. तो अब ये मैंने लॉगिन क्यों कर लिया है, I can click on the download and it should actually start downloading the tiger for me. I don't know इसके अंदर एनिमेशन है कि नहीं है, but so directly हम, so ये tiger कुछ हो गया डाउनलोड. When I click on import, तो आप देखेंगे कि ये एक टाइगर नाम का फोल्डर बनाना चाह रहा है मेरे इस नीचे बॉल्स वाले फोल्डर में, जहां पे मैंने घास और ये फुटबॉल का टेक्सचर रखा था, assets folder में. I click on import, and within a few seconds you will see a tiger folder down here in this folder. आया जी टाइगर मटेरियल से, ये टाइगर आ गया जी, और इस टाइगर को मैं अपने सीन के अंदर लिटरली, कौन सा वाला, ये वाला टाइगर है, we have this tiger, ला के देखते हैं जी ये आएगा कि नहीं आएगा. Oh yeah, we are getting this tiger in here. Whoa. So I have this tiger in my scene. I can rotate the tiger, I can move the tiger, I can increase the size of the tiger, I can place the tiger wherever I want. And when I go into the game scene, now you can see कि हमारी ball wall वाला काम सारा वैसे ही हो रहा है, but the tiger is there.
So you could get these 3D models and you can see कि बॉल जो है वो इस वक्त टाइगर के बीच में से थ्रू हो रही है, क्योंकि टाइगर में बना बनाया कोलाइडर हमारे पास नहीं आया। ये कई तरह के टाइगर हैं, इसमें उन्होंने दिए हुए हमें, प्रॉबली एक आइडल टाइगर भी है, इसको हम सीन व्यू में जाके एक आइडल टाइगर भी डाल सकते हैं। ये टाइगर जो है कुछ नहीं कर रहा है, वेला खड़ा हुआ है। और एक ये वॉक टाइगर भी है जो ये वॉक कर रहा है। So obviously it is a free asset, you know. What I can do is मैं इस टाइगर के अंदर क्या कर सकता हूँ, very easy. You could go click the tiger और इंस्पेक्टर में से I can add a collider. So let's add a box collider जिसका साइज बड़ा अजीब सा आ रहा है अभी। You can see the green box is the collider. You can see कि ये बने बनाए जो कोलाइडर्स आते हैं वो तो आसान होते हैं और वो बिल्कुल उसी शेप के होते हैं जिस शेप का ऑब्जेक्ट है। Later you can actually learn how to design objects and make their colliders. So अब ये जहाँ जहाँ ये ग्रीन डब्बा नजर आ रहा है, it is the collider of the tiger. तो अब जब हम गेम चलाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये टाइगर से भी वो टाइगर से कोलाइड करके बाहर निकल गया। I could change the position of the tiger and now it is going to jump over the tiger, and but when it comes back it does collide with the tiger and stops. और मैं ये डब्बे भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और मैं एक्चुअली अपना फुटबॉल भी रिमूव करने लगा हूँ यहाँ से, और मेरा कैमरा मैं वापस अपनी पोजीशन 060 पे ले जाते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसकी रोटेशन भी 0 कर देते हैं। सो अब ये मेरा कैमरा जो है ना ये ओवर हेयर प्लेस कर देते हैं शुरू में। अब जब हम गेम चलाएंगे तो ना बॉल होगी ना टाइगर होगा, बल्कि कुछ ऐसी सूरत हाल होगी। This does not look very cool right now, but I'm going to do one more thing now. मैं क्या काम करूंगा, यही जो प्लेन जिसका साइज आप देख सकते हैं कि स्केल इज 6, 10, 10, मैं ऐसा ही एक और प्लेन भी बनाता हूँ। आई गो टू गेम ऑब्जेक्ट 2D और यहाँ 3D, और इसमें हम एक और प्लेन डालते हैं और इसका साइज भी हम 6, 10 ही कर देते हैं। सो आई चेंज द प्रॉपर्टी, सो इसकी पोजीशन 0, 0, 0। ये बिल्कुल हमारे पुरानी घास के सेंटर में आ गया है डब्बा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसका साइज हम कर देते हैं 6 by 10, लेकिन वाई कमानी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि ये इसके ऊपर, सो घास इसके नीचे चली गई है और ये प्लेन ऊपर आ गया है और इसको 6 नहीं 1 by 10 करते हैं। ओके, सो व्हाट यू सी इज कि ये घास का मैदान है और उसके बीच में एक ही स्ट्रिप जा रही है, फ्लैट पट्टी 1 by 10 की। और जब मैं गेम को रन करूंगा तो कुछ ऐसी सूरत नजर आएगी, इसको हम और बेहतर बना लेंगे बाद में। What I'm about to do is, मेरे पास एक और इमेज पड़ा हुआ है, you can see ये एक रोड का टेक्सचर है, सड़क का छोटा सा टुकड़ा है। I want that strip जो मैंने अभी पट्टी बनाई है उसको मैं सड़क में तब्दील करना चाहता हूँ। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसी यूनिटी के अंदर I will drag the road, यहाँ नहीं, टाइगर के अंदर नहीं, बाहर रखते हैं। और जब ये रोड मेरे प्रोजेक्ट में आ जाए तो फिर मैं इस रोड के ऊपर ये इमेज ऐसे लगा दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि आपकी घास के ऊपर रोड आ गई है, और जब मैं इसको गेम मोड में देखूंगा तो यहाँ भी ये सड़क टाइप लग रहा है। कैमरा थोड़ा सा हमारा वियर्ड पोजीशन पे है, तो आई कुड प्रोबेबली चेंज द कैमरा साडा, कैमरे की वाई को हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। या दिस लुक्स बेटर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ही नजर आ रहा है कि ये सड़क की पट्टी पे भी ये सिर्फ 2 ही लाइन है, पूरी एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आई विल गो इनटू द इंस्पेक्टर और इसकी टाइलिंग भी हम 1 by 10 कर देंगे। उससे आप देखेंगे कि ये डैश 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 डैश
रोड के जो सेंटर पे वाइट लाइंस हैं वो रिपीट आ रही हैं। और जब मैं इस गेम को रन मोड में देखूंगा तब भी ये आपको ऐसी ही नजर आएंगी। तो ये काम तो ठीक हो गया। मैं गेम चलाऊंगा तो मुझे एक रोड नजर आ रही है और उसके दोनों तरफ घास नजर आ रही है। हम चाहें तो घास का साइज और बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि ये उसके किनारे बड़े अजीब से नजर आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने वाली है। हम उसको भी करते हैं और बेहतर करते हैं ताकि इसके किनारे नजर ही ना आए। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज आई वांट टू गो बैक टू माय एसेट स्टोर एंड आई नो कि यहाँ पे यूनिटी वालों का एक टूल होता है, एक एसेट होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। हमने देखा था कि फ्री टूल्स में सबसे टॉप पे आ रहा था। तो ये कुछ और एसेट्स नहीं है, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये ग्रे सा टूल एसेट, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूंगा। यूनिटी वालों ने खुद बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई स्पेसशिप है, इसमें गाड़ी है, एक आधा बंदा है, बहुत सारे कोड हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, एनवायरमेंट्स हैं, दरख्त हैं, पानी है, एक्सप्लोजन हैं, वो इन्होंने बना के फ्री में यहाँ पर डाले हैं। सो आई विल इंपोर्ट दैट। इसमें से मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, आई विल बी यूजिंग अ ट्री। एक दरख्त हम अपनी गेम में लगाना चाहेंगे कि सड़क किनारे दरख्त लगा हुआ है। ये जो जो फाइल्स कहे आप इसको इंपोर्ट कर लें, और इंपोर्ट करने के बाद यूजुअली it takes around 20-30 seconds minimum. Sometimes it takes around 2 seconds to import and decode and compile the code in the package. So थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। There are literally dozens, rather hundreds of assets in this folder. So फिलहाल मैंने सारी import कर ली हैं for the simplicity. और ये इंपोर्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे टाइगर का फोल्डर आ गया था, ऐसी स्टैंडर्ड एसेट्स का यहाँ पे फोल्डर आ गया है। यहाँ पे थोड़े से कोई कोड एरर्स पास दफा आते हैं क्योंकि थोड़ी सी पुरानी वर्जन स्टैंडर्ड एसेट्स है। मैं एक लाइन का कोड यहाँ ठीक करूंगा। यू रियली डोंट नीड टू नो दिस फॉर नाउ, बट इट इज being recorded, so if you want to do the same in your code. So ये हमारे यूनिटी एसेट जी तैयार हो गए हैं। अभी हम कोड भी लिखते हैं, बट राइट नाउ आई हैव दिस यूनिटी स्टैंडर्ड एसेट्स इंपोर्टेड, और ये अभी तक इंपोर्टिंग ही कर रहा है। तो थोड़ा सा और हमें टाइम लेना होगा। तो नीचे यहाँ पे ये कंसोल विंडो जिस पे एरर्स भी आते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने यूनिटी स्टैंडर्ड एसेट्स के फोल्डर में, और इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीजें हैं, एडिटर है, कैरेक्टर्स हैं, कैमराज हैं, इफेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट्स हैं, फॉन्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं। मैं आई विल गो इनटू द एनवायरमेंट्स, और एनवायरमेंट्स में आई विल गो इनटू द स्पीड ट्री, और इसमें से मैं एक ब्रॉड लीफ नाम का दरख्त होता है जो मैं यहाँ से पिक करना चाहूंगा। और मैं अपने सीन के अंदर अपने कैमरे के पास, कहाँ है जी कैमरा, ये मेरा कैमरा है, इसके पास आई विल ब्रिंग दिस थिंग ब्रॉड लीफ। You can see this is a very detailed and nice looking tree जो कि 3D में बना हुआ है, जिसके ऊपर पत्तों का टेक्सचर लगा हुआ है, अंदर तने का टेक्सचर लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत शेडो दे रहा है। थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसको बिल्कुल वैसी जैसे हम अपने बॉक्स को रिसाइज कर सकते थे। और ना सिर्फ ये कि आप ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज और रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन rotate this whole tree, बल्कि you can also copy paste. So I can click on tree
what this is the conifer they have here. So I could have a few copy, paste, paste, and paste. ये हमारी सूरत हाल बन गई दरख्तों की एक कॉर्निफर हम सड़क के दूसरी तरफ लगा लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डब्बों को फुटबॉल को मूव कर रहे थे दूसरा मूव करें बट यू कैन सी दैट वी हैव अ डिसेंट लुकिंग रोड विद सूरत हाल आपके गेम व्यू की नजर आ रही है I could probably move the camera a little to the back as well. ये है हमारी गेम की सूरत हाल अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सूरज की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आई कुड ऑल्सो गो टू माई डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे लाइट और इसकी इंटेंसिटी भी हम बढ़ा सकते हैं टू गिव अ बेटर फील कि शाम का टाइम है या ये दोपहर का टाइम है I think so we'll go for soft shadow and shadow की strength भी कम की जा सकती है कि बहुत जबरदस्त shadow है या ये थोड़ा सा dim shadow है प्लीज नोट कि जब आप ये गेम रन करते हैं तो आपका जो GPU है जिसके ऊपर गेम चलती है या CPU है यूजुअली GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को काम काफी करना पड़ता है जितने ही डिटेल्ड आपके ऑब्जेक्ट्स हों और जितने डिटेल्ड आपकी शेडोज हों लाइट एंड शेडो अब सड़क ही बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सड़कों और मैदान की लेंथ बढ़ा दूं तो इसकी जी में लेंथ अगर मैं 20 कर दूं और इसकी भी मैं 20 कर दूं हाँ अब ठीक लगेगा so I'm going to move them a little forward I can also copy paste all the 8 trees and have another copy of 8 trees over here. So काफी सारे दरख्त आगे पीछे randomly लग गए हैं और ये हमारी सूरत हाल है. Now I really feel कैमरा के पास जाके अपने ही सीन के अंदर I can press WASD to move around. So I can press W right click करके WASD करें तो I could actually so there was something called medieval cartoon heroes. इसमें काफी सारी ये नजर आने शुरू हो जाए. There are 3 female heroes and 3 male heroes. I will import this. ये characters मजे की बात ये है कि कैरेक्टर भी हैं इसके अंदर इनके पास स्वॉर्ड शॉट तलवार भी पकड़ी हुई है उन्होंने and they also have some animations in there. So I will import the whole thing. जब आप import करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे एक टाइगर का फोल्डर था जहाँ पे एक स्टैंडर्ड एसेट्स का फोल्डर था वहाँ पे ये हीरोज का भी फोल्डर वहाँ बन जाना चाहिए. So I'll have to wait for a few more seconds to get the heroes in my game. And I'll try to get these characters to see कैसे characters हैं. So I go to the character free fabs. For example, in the mail folder, I have this fellow here.
So you can see this. We have this fellow here, or it could probably if I tell you these guys have skeleton in there as well, we don't have enough time to talk about that. But there is a skeleton inside these characters, or skeleton को हम आमतौर पर कहते हैं it is a rig. So maybe I will delete two of these characters and I'll use this guy, put him in the middle of the road. अगर हम इसको चेक करें तो ये भाईजान यहाँ नजर आ रहे हैं. भाईजान को थोड़ा सा और पीछे ले आते हैं, नियर द कैमरा. ये है हमारी सूरत हाल, और कैमरा को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा करीब करते हैं. सो व्हाट आई वांट इज कि ये भाईजान कैमरे में आगे चलते हुए नजर आए. दिस कैरेक्टर शुड बी विजिबल वॉकिंग फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट. अब जब मैं इस गेम को चलाता हूं, what you see when it runs is this. Oh, this guy is animated. So this character is actually animated. इसको मैं साइड से इधर से देख के देखते हैं कैसे चल रहा है. So this looks like he is free. इसकी animation का नाम, if I tell you, is the idle animation. He's holding the sword and he's ready for a fight probably. So he's holding the sword and ready for the fight. So हमें ये तो नहीं चाहिए. We want this guy to walk या run. I can tell you कि थोड़ा सा इसकी ये जो कैरेक्टर है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके इंस्पेक्टर में जाके देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ है. So this guy has, so you can see कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका नाम मेल है, इसका नाम मैं वॉरियर हूँ. I can change. इसी तरह से ये प्लेन था, इसका नाम मैं ग्रास कर सकता हूँ, और इस प्लेन का नाम मैं रोड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द इतने सारी चीजें हो जाती हैं आपकी गेम में कि आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है. बट इफ आई क्लिक ऑन वॉरियर या ये वाला कैरेक्टर, आप इसके इंस्पेक्टर में देखेंगे इसकी वही पोजीशन, रोटेशन, स्केल, लेकिन इसमें एक चीज पाई जाती है व्हिच इज कॉल्ड एनिमेटर. एनिमेटर का कंट्रोलर है, एवटार है, वगैरह वगैरह. इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस एनिमेशन कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर यहाँ पे नजर आ रहा है, इफ आई डबल क्लिक ऑन दैट यू विल सी कि यहाँ पे एक और विंडो खुल गई है. ओह, इस विंडो, और इन डब्बों को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एनिमेशंस के नाम लिखे हैं, और ये जो ऑरेंज एनिमेशन है इसका नाम है मेल स्वॉर्ड स्टैंस, मेल आइडल, मेल डाई. सो उनके फीमेल की अलग एनिमेशन होंगे. मेल स्वॉर्ड ब्लॉक, मेल स्वॉर्ड हिट, मेल अटैक 1, मेल अटैक 2, मेल अटैक 3. सो हम क्या चाहते हैं कि प्रोबेबली दिस गाय शुड मेल वॉक, ये काम करना चाहिए इसको. सो आप देखेंगे ये एक स्टेट डायग्राम है, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखते होते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या अपने प्रोग्रामिंग में देखते हैं, जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो देयर इज अ स्टार्ट स्टेट एंड देन यू गो टू अ डिफरेंट स्टेट. अभी क्या हो रहा है कि जब भी गेम चलती है ये एंट्री से मेल स्वॉर्ड स्टैंस पे चला जाता है. ये इसकी एनिमेशन है. मैं चाहता हूँ कि ये मेल स्वॉर्ड स्टैंस की बजाय चला जाए या मेल स्प्रिंट पे चला जाए. So I will right click on this and make it as a set as layer default. तो आपने देखा कि ये जो है ना भाईजान ऑरेंज हो गए और ये भाईजान अब ग्रे हो गए. If I run the game now, what happens is this. Lord, this guy has started running and he has literally run away from us. वो अगर मैं रनिंग की बजाय इसी स्टेट डायग्राम में मेल वॉक आइडल को डिफॉल्ट लेयर बना दूं तो अभी ये भागने की बजाय थोड़ा आराम से चलेगा. सो दिस गाय अब तमीज से सीधा सीधा चलते जा रहे हैं. सो प्लीज नोट कि ये एनिमेशंस और एक कैरेक्टर ये किसी 3D मॉडलिंग टूल में किसी एनिमेटर ने बना के एनिमेट करके हमारे लिए उस पर डाल दिए हुए हैं ऑन द गेम स्टोर. सो अब प्रॉब्लम ये है कि वो भाई रवाना हो गए. द गाय हैज लेफ्ट द सीन and we are looking at him from a distance. What do we need to do if I want the camera to follow this guy?
The easiest thing I can do is look at this hierarchy. हमारे पास camera है, हमारे पास warrior है, हमारे पास दरख्त है, हमारे पास light है. I will hold the camera and I will drag the camera and I will drop it on the warrior. तो ये warrior के अंदर इसका child बन जाएगा. Anything which is the warrior child, you can see कि warrior के अंदर उसका character child है, उसकी leg child है, उसका torso child है, उसका head child है, उसके hair child है. इसी तरह उसका camera भी child बने. The camera into the warrior. So once I run this game now, what happens is that the camera is actually following the guy. So अब अगर ये पैदल चल रहा है तब भी, और अगर मैं इसको वॉक की बजाय स्प्रिंट पे ले जाऊं तब भी, the camera should be following the guy. Neat stuff. All right. Yeah, so we're running out of time and I'm sure कुछ लोगों का बिल्कुल information overflow हो रहा होगा, लेकिन एक दो चीजें और हम करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस के हैं और अभी तक हमने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा, तो एक दो लाइन का कोड भी हम लिख के लिख लें. Now what I want to do is कि जब मैं अपने कीबोर्ड पे राइट एरो दबाऊं तो this guy should move right, यानी इसका x जो है, इस कैरेक्टर का x पोजीशन प्लस में जानी चाहिए when we press the right arrow key, और माइनस में जानी चाहिए when we press the left arrow key. तो ये करने की हम कोशिश करते हैं. हम उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कोड लिखना होगा, और हर ऑब्जेक्ट में आप कोड लिख सकते हैं. आप दरख्त में कोड लिख सकते हैं, आप सड़क में कोड लिख सकते हैं, आप बिल्डिंग में कोड लिख सकते हैं, आप गाड़ी में. हमने इस वॉरियर को सिलेक्ट करना है, ये कैरेक्टर, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आ रही हैं इंस्पेक्टर में. डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ देम, गो टू द बॉटम और नीचे जाके ऐड कंपोनेंट, और यहाँ पे यू वांट टू राइट अ स्क्रिप्ट. सो दिस इज द न्यू स्क्रिप्ट वी हैव, जिसका नाम हम रख देते हैं वॉरियर स्क्रिप्ट. हमने किया वॉरियर स्क्रिप्ट, इसने नीचे ये वॉरियर स्क्रिप्ट ऐड कर दिया. ये हैश भी नजर आ रहा है आपको. सो बाय डिफॉल्ट C# में हम कोड लिखते हैं यूनिटी के अंदर. आई विल डबल क्लिक ऑन द वॉरियर स्क्रिप्ट और ये बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो लॉन्च करता है. अगर आप यूनिटी इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ कम्युनिटी वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो भी फ्री में आता है. सो फॉर एवरी गेम there is something happening several times a second, so we call it a frames per second count. So जब हम गेम खेलते हैं तो during our game things are happening several times a second depending on your computer performance. So आपका जो गेम सीन है वो हर सेकंड में 30 दफा या 60 दफा या 70 दफा या 100 दफा अपडेट हो रहा होता है. You're changing things. हम क्या चाहते हैं कि इस कैरेक्टर की लोकेशन राइट लेफ्ट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू द कीबोर्ड. तो वो कोड हम लिखते हैं अपडेट में. कोई चीज आपने इनिशियलाइज करानी हो तो वो स्टार्ट में लिखते हैं. ये अब जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, दिस इज C# का कोड जिसमें वॉरियर स्क्रिप्ट के नाम की क्लास हमने बनाई है, व्हिच इज अ सब क्लास ऑफ मोनो बिहेवियर, एंड वी आर ओवरराइडिंग टू फंक्शंस, टू मेथड्स. एक का नाम है void start, एक का नाम है void update. Without getting into further details, मैं सिर्फ अपडेट के अंदर 2-3 लाइंस का कोड लिखूंगा. एक तो हम ये लिखेंगे कि अगर राइट एरो प्रेस होता है, if input dot get key key code dot right arrow, अगर ये राइट एरो प्रेस हुआ है तो आप इस कैरेक्टर के ये वाले ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन का x बढ़ा दें. I say transform dot position dot x इसको मैं transform dot translate. Translation is movement. x में हम +1 कर देते हैं, 0.1 कर देते हैं. ऊपर नीचे तो नहीं मूव कराना. y में 0, z में 0, और ये 0.1 को हम f कराते हैं फॉर फ्लोट. सबने पढ़ा होगा इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर आर द बेसिक डेटा टाइप्स इन सेवरल programming languages. So 0.1 float is my feeling that this should work fine. So जब भी मैं right arrow press करूंगा, this character should move right. ये code this, the guy is moving forward. When I press right arrow,
Oh, it is going right very fast. It's too fast. बहुत ज़्यादा तेज है, इसको 0.01 कर देते हैं. और इसी तरह if input dot left arrow key, केस में भी आप यही ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव 0.01 की बजाय आप नेगेटिव 0.01 करेंगे. सो अब जब मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी दैट राइट एरो पे वी मूव राइट, लेफ्ट एरो पे वी मूव लेफ्ट. बट आई रियली डोंट लाइक दिस भागने वाली एनिमेशन, सो आई विल जस्ट चेंज द एनिमेटर बैक टू मेल वॉक. सो वॉक कर रहा हो या ना कर रहा हो, राइट लेफ्ट तो ये करेगा. राइट मूव करने से इट गोज राइट, लेफ्ट मूव करने से इट गोज लेफ्ट. ओके, एंड प्रोबेबली द लास्ट थिंग आज के लिए जो हम करना चाहेंगे, आई होप, वो ये है कि मैं जब कोई स्पेस दबाऊं या कोई की दबाऊं तो इसमें से कोई और एनिमेशन चल जाए. फॉर एग्जांपल स्वॉर्ड ब्लॉक मेल अटैक 1 चल जाए. इसका नाम है जी मेल अटैक 1. सो मैं वापस कोड में जाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, जो आपकी कीबोर्ड पे स्पेस होती है. इसी तरह के इनपुट पैरामीटर्स और फंक्शंस होते हैं फॉर द टच स्क्रीन और फॉर द जॉय पैड और फॉर द एक्सेलेरोमीटर. बट अभी हम इसको कीबोर्ड से करें. जैसे ही स्पेस दबाए, you get component which is your animator, और animator पे you dot play में क्या करना है, you have to give the name of the animation. क्या नाम था यार, animation का mail attack 1. So I will say mail attack 1. So मैं space दबाऊंगा तो वो mail attack 1 चलने चाहिए. Hopefully, let's see. So I go back to the game, left standing there. So this is the current stance of this fellow, which is fine. This is the end of your animation. बिल्कुल किसी भी स्टेट डायग्राम की तरह मैं एनिमेटर में ही करूंगा. जब भी ये मेल अटैक 1 हो, उसके बाद आप इसको ट्रांजिशन करें एक एरो ऑन टू द मेल वॉक. सो जैसे ही ये एक दफा तलवार चला चुके, उसके बाद फिर वॉक करना शुरू कर दें. इज दैट गोना वर्क? सो आई रन द गेम. This fellow is walking. I press space, attack, and walking. Attack, walking. Go left, attack, and walking. Attack, and walking. So literally with 9 lines of code that I wrote right now, I am capable of turning this guy right and left and make him attack and keep him walking. And we can continue adding more stuff. So this is some beautiful shadow. This guy is walking in. There is no limit right now. आप चाहें तो condition लगा लेंगे, अगर ये ज़्यादा right पे जा रहा है तो रुक जाए. फिलहाल it can go to as much right as it wants. It can actually try to hit the tree and go through it because there are no colliders. So you continue to work on the game and eventually it will get better from here on. So literally in an hour, we have a game where we have a character walking, we have trees, we have environment, we have input key interactivity. जो हमने शुरू में कहा था, the definition is that the game is an entertainment software that is interactive. So we are controlling the guy moving right and left. We are giving the command for it to attack. और इसमें और भी animations हमें मिल रही हैं, तो हम वो भी use कर सकते हैं on these characters. So this is how simple and easy it is to start making the game. But what happens is that the expectation of the player with so massively huge games which are being played online multiplayer, that it is difficult for individual players to game makers to make games which are competing with them. But still, this is how simple it is to start working with the work you want to do. Obviously 1 घंटे में तो हम कुछ नहीं कर सकते थे,
But I have some online trainings placed on some different websites. Some of them are paid and some of them are free. So if you need discounts or probably some trainings, which I hope the COVID wala masla agar hal hota hai, I could probably drop by your uh, campus someday as well. I'd love to come to see you on campus when the activities resume on campus. Otherwise, I have put up a Google form here. Maybe I can share the link with you guys as well. A simple form is just you could probably share your name and email address with me if you want me to send you some training videos that I have, and if you want me to send you some offers where you could probably get some discounts on that. So you could probably hit this link. I don't know if the chat is enabled for me. Do we have a chat in this thing here? No, sir, we don't have a chat. चलो ठीक है ये लिंक फिर probably ये slide deck इनके साथ share कर देंगे आप बाद में. Maybe Yes, sir. somebody wants to sign up. There is no promotion going on here right now, but I could probably मेरे कुछ courses हैं जो Udemy पे पड़े हुए हैं, कुछ courses हैं जो Air School पे पड़े हुए हैं. So maybe you could probably get a discount if you sign up with this form. I'll be happy to hear from you guys. You can follow me on Twitter if you have any questions. And if you have questions right now at the end of the discussion, please raise your hands and we can take the questions one by one. So the coordinators and organizers, Hassan and everybody else, I hope कि हमारी आज की discussion का pace कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं था या ज़्यादा slow तो नहीं था, boring तो नहीं हुआ काम. Just need a little feedback from you guys. No, sir, it was perfect. Everything from start to finish. Wonderful. So I wish I had more time. We could probably do this again in some other event, or maybe we could actually turn it into a on-campus event once the activities continue. So I'll be happy to connect with you guys. This is my first time I'm talking to the GC audience in general. I've been teaching at different universities and conducting seminars in different places, but this is the first time I'm interacting with GC people, so I'm happy. This was less of an interactive session. Online में इतनी interactivity हो नहीं पाती. सब लोग एक hall में अगर बैठे हो तो ज़्यादा बेहतर होता है. So if we have any questions, otherwise we can just call it a day. Over to you, Hassan. Okay, sir, I guess no questions. You can conclude your talk if you like. No, I think we're done. This is all I had to say. Obviously, game कोई इतनी complete game तो नहीं बनी. It was a simple, decent scene that we had. So please do connect with me over Twitter or whatever way you would find me on social media maybe. And I'll be happy to connect with all of you guys. And if there is something in future, do let me know. I'll be happy to come over to your campus whenever the COVID thing is over. It was nice talking to you guys all. Thank you very much. Okay, sir. Thank you very much. Now I would like to read some messages from my collaborators. At first, we have our collaborator, IEEE School of Electrical Engineering and Computer Science. As one of the world's largest and most renowned technical professional organization among scientists and engineers alike, IEEE offers numerous opportunities to get involved with technical communities across the globe. IEEE's NUST branch, IEEE SWCS, since its inception has been offering opportunities in innovation through highly cited publication, conferences, professional and educational activities. Please hold for a moment. For
delay. IEEE Robotics and Automation Society plays a pivotal role in promotion and robotics and aids in exchange of technical information among members and affiliates. Similarly, IEEE SWCS also promotes effective movement and emancipation in engineering and research fields through IEEE Women in Engineering section. The core purpose of IEEE SWCS is to foster technological innovations and excellence amongst the NUST community. To implement this vision, IEEE SWCS has conducted multitudes of events ranging from events like TISP to empower teachers and students with exciting engineering lessons to pick technical courses to workshops on MATLAB, Arduino system Verilog, and managing startups. To highlight specific areas of technical computing, IEEE SWCS also conducted Tech Talks, an array of interaction sections on machine learning, Internet of Things, PyTorch, version control systems, and introduction to UI/UX. IEEE SWCS has also collaborated with IEEE UET on a webinar regarding public speaking and furbishing soft skills, as well as collaborating with IEEE Islamabad section by launching an interactive session highlighting advantages and perks of international IEEE membership. This persistent effort has led to several awards and achievements in recent years. IEEE SWCS has nominated in Larry K. Wilson Regional Student Activities Award, IEEE Regional Exemplary Student Branch Award, IEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor Award, and got second position in regional website competition as well. IEEE SWCS was also nominated in Islamabad Section Award including Best Student Branch, Best Student WIE Affinity Group, Best Student Technical Chapter, and Distinguished Professional Member Award. Now up next we have SES, Software Engineering Society, MUET. It is really overwhelming to Engineering Society, MUET, as our proud partner. SES is the mark of excellence and is well known for its contribution in the discipline of SWE. Software Engineering Society of Mehran University of Engineering and Technology is a dynamic platform for the tech lovers and is pioneer of trends in the discipline of software engineering. SES is renowned for its exceptional consistency and hard work in the fields of software. Last but not the least, we have IET on campus UET KSK campus, the Institute of Engineering and Technology. IET on campus UET KSK provides a forum for people in computer science and engineering domains, allowing them to empower their grasp on the technological of their respective fields, along with enhancing creativity gives us a platform to technical communities as well as internationally. A few of our recent collaborations includes the IET on campus UET Lahore, IET on campus Lahore, IEEE UET campus, and GCU-ACM student chapter. Up next, we have a video. Pay attention, please. Assalamu alaikum. IIT on campus UT KSK, chapter of Institute of Engineering and Technology, a world-leading professional organization working for the betterment of students in both technical and non-technical domains. IIT on campus UT KSK arranges a number of events and seminars throughout a year to make its members independent, well-rounded, and stand out from the crowd. Collaborations with other notable organizations is a great boost. For this purpose, IIT on campus UT KSK collaborated with GCU-ACM student chapter for their event All Pakistan Technical Festival 2021. We are looking forward for the great event ahead with the organizers. Such a event is very beneficial for the students and accelerate them in their technical domain. For further updates, please visit our Facebook page and as well as Instagram page. Our page is IIT on campus UT KSK. Allah Hafiz and thank you so much. Assalamu alaikum. This was all for the collaborators. Thank you. And up next, we have our upcoming webinar.
Evolution of 5G in New Zealand, What's Next? Our guest speaker for this webinar is going to be Dr. Syed Hassan. Our guest has received a bachelor's degree in electrical engineering from the NED University of Engineering and Technology, Pakistan in 2008, and the PhD degree from the Ulster University, UK in 2011. He is currently a senior lecturer at the Department of Electrical and Mechanical University, Mess University, New Zealand. So everyone, please look forward for our next webinar. The link of the webinar is the same.